For all the plaster cracks on exterior and interior walls, SmartCare Crack Seal is the perfect solution. It is a single-pack fiberglass reinforced crack filling compound which comes as a ready-to-use and easy-to-apply white-colored paste. Think of Crack Seal as a band-aid used to heal minor wounds and bruises on a wall. Crack Seal can be used to fill cracks up to 3 mm wide on all exterior and interior masonry surfaces as well as POP. It is also extremely useful for cracks that are caused due to drying and shrinkage. Because of its high polymer content, it is flexible in nature and can hence accommodate minor crack movements. Its fiberglass reinforcement makes it strong and doesn't allow cracks to reappear. It takes less time to dry compared to its competitors, and it is water resistant, thus preventing water leakage through the filled cracks. Also, because Crack Seal has low shrinkage, it does not leave marks once it is painted over. Its features thus make Crack Seal the perfect solution for plaster cracks. To summarize, SmartCare Crack Seal is used to fill plaster cracks on exterior and interior walls. Its features are crack bridging of 3 mm, flexibility, mechanical strength, waterproofing, low shrinkage, ease of use. Let us understand the types of waterproofing that can be done. The first type is positive waterproofing, which is more commonly used, particularly in new constructions. This means that the waterproofing coating or solution is applied to the same side as the source of water. Simply put, it usually means stopping the water at the source or point of entry, thus preventing water penetration into the structure. Let us now understand the principle of negative side waterproofing. This is simply the opposite of positive waterproofing. Here, the waterproofing coating is applied to the side opposite to the source of water. Think of it like the safety door that some homes have, inside the main door of the house. SmartCare Crack Seal. क्रैक सील एक ग्लास फाइबर मिक्स पेस्ट है। यह स्पेशल ग्लास फाइबर दरारों को भर के दीवारों को मजबूत और वाटरप्रूफ बनाता है। इसका लचीलापन बदलते तापमान में भी दरारों को खुलने नहीं देता। इतना ही नहीं, ये मेसनरी सरफेस पर आसानी से जुड़ जाता है और इसके सिकुड़ने का भी नो टेंशन। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि 3 mm तक की दरारों पर भी बहुत असरदार साबित होता है। रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, तो नो पानी, नो झंझट और सूखने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेता, तो फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व। ये है एशियन पेंट्स का नया SmartCare क्रैक सील। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले क्रैक्स को पुट्टी छुरी से थोड़ा गहरा करें और उन्हें वी आकार दें। उसे अच्छी तरह से साफ करें ताकि मिट्टी, तेल या निकला हुआ पेंट वहां पे रह ना जाए। बाहरी क्रैक्स के लिए आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करें। इन बाहरी क्रैक्स की वजह से ही पानी दीवारों के भीतर घुस जाता है, जिससे पेंट का पपड़ी बनना और भद्दे दाग आना दीवारों पर शुरू हो जाता है। अंदरूनी क्रैक्स के लिए एशियन पेंट्स डिको प्राइम प्राइमर और बाहरी क्रैक्स के लिए आप एशियन पेंट्स का एक्सटीरियर वॉल प्राइमर उपयोग में लें। अब अपना सरफेस क्रैक सील लगाने के लिए रेडी हो गया है। क्रैक सील को क्रैक में पुट्टी छुरी से दबाकर भर दें और उसे दीवार के सरफेस से समतल कर दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि क्रैक के दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर तक इसे अप्लाई करें। इसे आप पहले सीधे और फिर आड़े तरीके से लगाएं ताकि हवा का बुलबुला न छूटे और इसे 12 घंटे तक सूखने के लिए रख दें। सूखने के बाद आप क्रैक सील की दूसरी परत लगा सकते हैं। 1 किलो क्रैक सील 2 कोट में करीब 70 से 75 रनिंग फीट दरारें भर सकता है। दूसरी परत सूखने के बाद आप पीओपी या एशियन पेंट्स वॉल पुट्टी से
क्रैक्सील का इस्तेमाल करते वक्त आपको इन महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यह सिर्फ 3 मिलीमीटर या कम चौड़ाई वाले क्रैक्स के लिए इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल 5 डिग्री से नीचे के तापमान में कभी ना करें और ना ही गीले सरफेस पर। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्ट्रक्चरल या जॉइंट क्रैक्स के लिए ना करें। इस्तेमाल के बाद पैक को ठीक से बंद करें।